जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एआईबी का रिवीजन सीरीज लेके आए हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है, सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द एसएचओ, व्हाट आर द ऑप्शन दैट अ कंप्लेनेंट हैज। तो हम एसपी ऑफिस में मूव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। दूसरा, हम प्राइवेट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं बिफोर कंसर्न मजिस्ट्रेट। Then after second, any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place। जो मेल है उनका एज क्या होना चाहिए, कितना कम से कम होना चाहिए, जिसमें पुलिस का उनको कंपेल नहीं करेगी कि आप पुलिस स्टेशन आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। तो वो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर एंड एबव द एज ऑफ 65 ईयर। Then after, if someone lies before the court on affidavit, how it can be tackled by an advocate? Perjury application can be filed. Option number A. Third, fourth, proclamation for person absconding shall be published as follows। जो भी प्रोक्लेमेशन होता है, abscond हो जाता है, तो वो क्या फॉलो किया जाता है। तो इसमें सारा करेक्ट है। इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और द विलेज इन विच द पर्सन ordinarily reside। It shall be affixed to some conspicuous part of the house or home stated in which such person ordinarily reside, or to some conspicuous place of such town or village. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. The court may also, if it thinks fit, direct a copy of proclamation to be published a daily newspaper circulating in the place in which a person ordinarily resides। तो ये सारा ऑप्शन करेक्ट है प्रोक्लेमेशन से लेकर। And then after fifth, in summon trial case instituted on a complaint wherein the summon has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complaint shall entitle acquittal of the accused। Then after, उसके बाद जैसे कि ये है कि is a tradesman in Ahmedabad. B carries on a business in Delhi. B by his agent in Ahmedabad buys a good of A and requests to deliver them to Western Roadway Transport Company. A deliver the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue B for the price of goods। तो ये कहीं भी अहमदाबाद में कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है एआईबी के लिए, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। Then after, what is the following section of Civil Procedure Code (CPC) deals with the concept of res judicata? Res judicata section 11, option B। Then after, इसके बाद हम आ जाए, हाँ, which of the following provision of CPC 1908 deals with the institution of suit? Institution of suit section 26, option C, 10C। Defendant shall within dash day of the date of service of someone on him present WS on his defense order। तो ये ऑप्शन आपको 30 दिन के अंदर में WS फाइल करना हो, जो कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास टाइम मिलता है 120 डेज के तक, कि आप नब कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ से उसका फिर, हाँ, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद टेम्पोररी इंजंक्शन और इंटरलोकरी इंजंक्शन। कौन सा ऑर्डर डील करता है इससे? तो ऑप्शन बी, ऑर्डर 39। ऑर्डर 39 डील्स विद टेम्पोररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकरी इंजंक्शन। Which of the following order deals with the death, marriage, and insolvency of parties? Option C, Order 22. Order 22 deals with death of marriage and insolvency of parties. ये भी important question. Then after, the doctrine of res gestae has been discussed in which section of the Evidence Act? Section 6, res gestae। उसके बाद judicial evidence means evidence received by court in proof or proof of facts। Which of the following is not a document according to Indian Evidence Act 1872? Um, uh, uh, an inscription on a metal plate to stone, a map or a plane, a character, none of these। ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्योंकि एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अ मेटल प्लेट स्टोन इज डॉक्यूमेंट, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, कैरिएचर इज अ डॉक्यूमेंट। तो ये सारा डॉक्यूमेंट में ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच ऑफ द सेक्शन? सेक्शन 113 बी में ये डिफाइन है। सेक्शन 113 बी एविडेंस एक्ट का है ये, ठीक है। तो 19 का बी। देन आफ्टर, एज पर ऑर्डर 6 प्लेडिंग सेल मीन्स, प्लेडिंग में दोनों आता है ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग। प्लेंट आता है बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट आपका 7 में है, उसका ऑर्डर 7, और रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस और पर्सन अदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इसको कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में और भी
बार बार पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा इसका क्लियरिफिकेशन भी पढ़ते हैं। एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस और पर्सन अदर देन जज or magistrate. An extrajudicial confession is a big piece of evidence, but it does not mean that extrajudicial confession cannot be sole foundation for conviction. It is the law that in appropriate case where the extrajudicial confession is beyond any doubt and in the same inspire the fullest confidence of the court, then it may be the sole foundation for conviction. But when it is not inspire the fullest confidence of the court, either it should be rejected in two or the same can be taken into account provided the same draw corroboration from independent source. Subramani versus State of 2013. The arbitral tribunal shall not be bound by the dash in the determination of rule of procedure. So, the binding shall not bound by the CPC and the Indian Evidence Act. Which of the following section deals with arbitration agreement? Arbitration agreement section 7. Then after the provision for maintenance pendant light in Hindu Marriage Act 1955 is given in section 24. Muslim wife may sue for divorce under the resolution of Muslim Marriage Act 1939 section 2 if the husband has been insane for the period of 2 years. Option B. A leading question may be asked in cross examination. सिर्फ cross examination में आप leading question पूछ सकते हैं. Which of the following is not ground of void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? Child marriage. Sapinda relationship means Sapinda means third generation of mother and fifth generation of father. Hindu, one of the following is not a ground of divorce. Which one of the following is not a ground of divorce in the Hindu Marriage Act? कौन सा divorce नहीं है? तो living separately for less than 3 months. ये नहीं है. Indian Christian can obtain divorce under which of the following enactment? तो किसमें? Indian Divorce Act 1869. The section 12 of Hindu Maintenance and Adoption Act 1956 deals with effect of adoption. Which of the following categories of case will not be entertained as public interest litigation? PIL. So landlord tenant matter. Option D. Who is the known as the father of public interest litigation in India? Justice P.N. Bhagwati. Muslim women has option to be governed by the provision of section 125 to 128 CRPC. Which section of the Muslim Women Protection of Right and Divorce Act 1986 deals with it? Section 5. The Husainara Khatun versus State of Bihar emerged as the basic fundamental right to speedy justice. ये बिहार का ही था केस. राइट टू स्पीडी जस्टिस के बारे में प्रिजन में थे बहुत दिन से, तो इस कारण ये केस डाला गया था. हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू स्पीडी जस्टिस. Which of the following writ can be issued against the usurpation of public office? क्यू वारंटो. क्यू वारंटो में हम पूछ सकते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी आप एज्यूम किए हो. रिक वर्सेस बेल्डविन केस डील्स विद natural justice. Ridge versus Baldwin case deals with natural justice. Meaning odio alteram pattern. A person cannot be condemned without hearing heard. मतलब बिना सुने हुए क्या केस डिसाइड नहीं होगा. A person cannot be condemned without being heard. 41 का A. Rules made by the Bar Council of India exercising its rule making power under the Advocate Act 1961. An advocate may, while practicing, take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university, so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law is not exceed 3 hours in a day. 3 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं अगर वो प्रैक्टिस में है तो. Which of the following landmark case the advocate was held guilty of professional misconduct? He has had forget the court order. तो ऑप्शन ए प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा. कोर्ट ऑर्डर. Which of the following is not a real purpose of public interest litigation? Getting famous and making wealth. के बाद आपका doctrine of lifting of piercing the corporate veil is associated with company law. Under which section of the Environment Protection Act 1986 can appeal to National Green Tribunal? NGT lies. Section 5A. Option B. Which of the following fundamental duties related to environmental protection? 51AG. उसके बाद then after Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator to receive the electronic record under the IT Act, known as addressee.
The minimum number of members required for registration of a trade union is 7. इसके बाद if any advocate is aggrieved by an order of disciplinary committee of the state bar council made under section 35 of the advocate act, or advocate general of the state may prefer an appeal to the bar council of India within 60 days of the date of communication of order. A person who has ultimate control over the affairs of the factory under factory 1948 is called a occupier. If the factory employ more than 1,000 workers, they should be appoint qualified welfare officer, they qualified safety officer to carry out the prescribed duties. 55 का ऑप्शन ए के बाद the principle of ubi just ibi remedium was recognized in Asway versus White. Gloucester Grammar School landmark case. Gloucester Grammar School damnum sine injuria. Then after the text of certified standing order shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority of his workmen. के बाद आ जाइए जीएसटी का ये है क्या स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. उसके बाद अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू स्टेट कमीशन. A person whom the agent names to act of the principal in the business of agency under the express or implied authority to name is called substituted agent. उसके बाद हाँ a perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which could be contrary to the right of the plaintiff. 67 का B. According to Section 5 Specific Relief Act 1963, a person entitled to a possession of specific immovable property may recover it in the manner provided in the CPC 1908. उसके बाद which of the following case it was decided that a contract with minor is void? Moidi Vivi versus Dharmodas Ghosh. Which of the following is not a negotiable instrument as defined under Negotiable Instrument Act 1881? बिलिंग रिसिप्ट ये नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता ये. उसके बाद who shall be the registrar of the trademark for the purpose of Trademark Act 1999? Controller General of Patent, Design and Trademarks. Option A 75A. 76. Which one of the following is not types of the IPR? Historical indication नहीं है IPR. उसके बाद constitutional provision of fundamental right are given under which part of the Constitution of India? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में हमारा मेंशन है. उसके बाद which of the following amendment act 1985 anti defection law added on the constitution of India? Anti defection law 52nd constitutional amendment. Option B. Which of the following cases Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 clause 2 and therefore if it violate any of the fundamental right it may be declared void? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था. यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में हमारा आर्टिकल 44. उसके बाद एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ और एनी ऑफ देम इन इनिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिस अंडर द स्टेट. ये दो है, एक तो आर्टिकल 15 में भी है, आर्टिकल 16 में भी है, तो दोनों में हमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ये याद रखना होगा हमें. इसमें है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. आर्टिकल 16 में 82 का ए. उसके बाद the minimum number of judges who are sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law as the interpretation of constitution for the purpose of hearing and reference made article 143 shall be, जो minimum number है वो 5 रहेगा 143 में. According to article 300A of the constitution of India, no person shall be deprived of this property shall be authority of a law. The title of constitution of India lays down in आर्टिकल 393. टाइटल हमारा 393 में. और बाकी इसमें जो है टाइटल हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया, ये सब हमारा आगे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये चीज पीछे दिया हुआ है. आर्टिकल 393. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शेड्यूल 7. के बाद अंडर सेक्शन 82 and 83 IPC, an offense punishable if it done by a child.
of above 7 year of age but below 12 year of age having attained sufficient maturity and understanding. नेम टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ पेनल लाइबिलिटी, तो इसका गिल्टी माइंड और रॉन्गफुल एक्ट, एक्टिव सीरियस एंड मेन सीरियस दोनों होना चाहिए. प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन आईपीसी सेक्शन 96 एंड 2 106. अब इसमें शायद बीएनएस में जो पूछे, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी. ये सब में है, इफ चाइल्ड बिलो द एज 12 ईयर या अनसाउंड है या इंजुरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है. तो के बाद कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन अ मदर्स वूम इज नॉट अ होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर बी का एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन अंडर आईपीसी, इसमें 2 साल है डिफॉर्मेशन का पनिशमेंट. उसके बाद a place men with firearms at the outlet of the building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building. ये confine किए हुए एक जगह. The provision of plea bargaining under chapter 21A CRPC are not applicable in the offense committed against the child below the age of 14 year. उसके बाद section 195 of CRPC, secular in character was observed which of the following case, Mohammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum. Who has the power of summary trial of the case? All of these होगा इसमें. CGM, Metropolitan Magistrate, any magistrate class especially empowered by the High Court. Which section deals with the position of compel appearance under the Code of Criminal Procedure 1973, section 61 to 90. An offence for which a police officer may arrest a person without warrant is known as cognizable offence. Assault or criminal force to a woman with intent to outrage her modesty under IPC, which kind of offence? Cognizable and non-believable offence. Thank you.